All right. So before I start, let me introduce quickly about myself. My name is Gunjan Shrimal. I'm lead trainer at CampRep and have been taking these sessions for last 6 years. First 10 years I've worked for these corporates, and then next 6 years, this is the campus trainings that been conducting. Almost 2,000 students we have seen very closely, and based on this particular trend, right, this session is organized. Okay, this is basically the list of the companies, although you know that which center you are appearing in and what are the number of companies, okay, that are there. I have already shared this in the group, but again, you can have a close look at the number of companies. Although it has become 230 now, there may be a slight change. एक या दो companies अगर आप देखोगे, तो that has increased. Okay. फर्म्स और इंडस्ट्री, राइट, ये दो सबसे मेजर कैटेगरीज हैं, राइट। इन दोनों कैटेगरीज को आपको के लिए आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, राइट। द नंबर ऑफ कंपनीज आर डेफिनेटली ऑलमोस्ट इक्वल टू May 24। जितनी May 24 में आई थी, लगभग लगभग आप देख रहे हो उतनी ही कंपनीज इस बार भी पार्टिसिपेट कर रही, विच इज डेफिनेटली गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट दिस पासिंग रेट इज हाफ, बट नंबर ऑफ कंपनीज आर ऑलमोस्ट इक्वल। सो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इस बार लास्ट ईयर लास्ट में के कंपेरिजन में डबल हो गए, राइट। सो दिस इज द in this particular slide, what you have to focus on is the yellow numbers, right? Yellow numbers are firms and industry, right? Most of the companies are participating in this particular category. So I'll be talking about this one first. So these are the industries, right? Although the names may not be very clear to you on your screen, but yes, these are the companies. If we'll put all campus put together, that in the industry category, like Alok Industries, ITC, Vedanta, Amazon, TVS Motor, L&T, Ford Motors, right? GMR Group. Okay, so these are spread all across 9 centers, right? जिस सेंटर में आप बैठ रहे हो उसमें भी आपको ये कैटेगरी सबसे ज्यादा दिखेगी, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने लिस्ट देख ली है, तो इसमें जो कंपनीज हैं कहीं ना कहीं आपको इस कैटेगरी में दिखेगी। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर यू विल बी प्लेस्ड, राइट। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि लाइक इन दिस पर्टिकुलर organization, let's say if you talk about Flipkart or Vedanta, okay, which particular vertical you will get. So that is something again a question mark, because they normally say that we are hiring as a management trainee. Yes, they do not disclose it very very clearly that in which department we are hiring you for, right? So it could be management trainee. Okay, in this management trainee vertical, you have to please understand that this is a typical finance department structure. कल को आपको सीएफओ बनना है, राइट। तो सीएफओ बनने के लिए आपको इन्हीं रास्तों से निकलना है, राइट। ये जो रास्ते हैं बेसिकली, ये कौन कौन से रास्ते हैं आप देख रहे हो? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, फिक्स्ड असेट्स, राइट। सो यहीं पे कहीं पे आपका प्लेसमेंट होगा, बट कहाँ पर होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं, ठीक है। सो वन थिंग यू अगेन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बिगेस्ट possibility in the industry category. You definitely will be appearing in one of the company or two of the company in this particular slide. This is a typical corporate structure जो इन कंपनीज का है, और इसमें से कौन सा आपको वर्टिकल मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is one thing which is very important for all of you to understand. Right now, these numbers which are written on the top is the percentage of employees which are working in the finance department, right? For example, 70% employees are working for financial reporting group. 15% employees are working for financial planning group, right? 10% are working for taxation, just like that, right? So that is the possibility. इसीलिए अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर मेरा एफपी&ए में मुझे जॉब मिलेगा क्या, तो उसकी पॉसिबिलिटी 15% है केवल, बिकॉज ओनली 15% एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एफपी&ए डिपार्टमेंट। और मैं आपको बोलूंगा कि आपकी 70% पॉसिबिलिटी कि आप
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम करोगे, बिकॉज 70% आर वर्किंग फॉर दैट डिपार्टमेंट. एंड हाउ अबाउट ट्रेजरी? कैन आई स्टार्ट माई करियर विथ ट्रेजरी? देर इज ओनली 2% possibility. Are you getting my point? So this is a very very simple slide which will tell you that when these companies are coming, आपकी कितनी possibility to get into that particular role, right? So किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर तो बताएं. Yes, anyone having any question? Because this is a series of discussion that we'll be doing. So everything is connected, right? थोड़ा सा deep discussion भी होगा. Okay. तो आप लोग अटेंशन बना के रखो, राइट? कोई भी स्लाइड मिस मत करो, बिकॉज एवरी स्लाइड इज हैविंग सम और द अदर रेफरेंस. ठीक है. सो ये बात आपको क्लियर हुई कि इंडस्ट्री में आपके अपियर होने के बहुत ज्यादा चांस है, और उसमें आपको इन डिपार्टमेंट में बैठने को मिलेगा, और इसमें से कोई भी एक फंक्शन आपको मिल सकता है. ठीक है. वैसे तो अब आपको जब लिस्ट आएगी, कल से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी, तो क्लैरिटी आ जाएगी. अगर उन्होंने क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है तो यू विल गेट क्लैरिटी, अदरवाइज थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा उसमें. तब आपको मान के चलना है कि हमें इन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही तैयारी स्टार्ट करनी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज द प्रिपरेशंस, राइट? अगर हम लोग इन पर्टिकुलर वर्टिकल्स में बैठते हैं तो आपके लिए एक बड़ा सवाल ये है कि देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स हियर, right? And I do not know which particular vertical they will put me in. You do not know that they will give you direct tax, or they will give you indirect tax, they will give you accounts payable, or they will give you treasury taxation. क्या आपको वो रोल देने वाले हैं? ठीक है. तो इसीलिए एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि फिर हमको प्रिपरेशंस क्या करनी है. तो उसका आंसर ये है कि लगभग आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा if you are going for industry. Are you getting my point? That's something which is a big problem, right? Because in this particular role there is no clarity. For example, अगर आपको बोलते हैं कि पीडब्ल्यूसी का स्टैट्यूटरी ऑडिट का कॉल है, तो आपको पता है कि मुझे स्टेट ऑडिट पढ़ना है और इंडेस पढ़ना है. लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ कि आलोक इंडस्ट्री का आपका इंटरव्यू है, तो आपको आलोक इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है. वहां पे मुझे डायरेक्ट टैक्स पूछेंगे या रिपोर्टिंग पूछेंगे, राइट? तो ये एक पॉइंट है. और रियलिटी में भी यही होता है. रियलिटी में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पहले के सेशंस में भी दिए हैं, और अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि डिपेंड करता है कौन इंटरव्यूअर है आपके. वो इंटरव्यूअर अगर टैक्स से हैं तो वो टैक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो अगर रिपोर्टिंग से हैं तो रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? तो इसके लिए अब आप लोगों को क्या करना है कि यू नीड टू प्रिपेयर दीज 4 सब्जेक्ट्स. ठीक है. जब भी इंडस्ट्री का इंटरव्यू हो तो ये चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो. मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, उसको सबसे पहले प्रिपेयर करिए. ठीक है. तो शॉर्ट में इट इज अ रिवीजन फॉर रेगुलर बैच ऑल्सो. मैं एक बार टॉपिक्स बोलूंगा, आप लोग शॉर्ट में टॉपिक्स लिखते जाओ. ठीक है. तो पहला, अगर आपका इंडस्ट्री का इंटरव्यू है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सर्टेनली इंडेस. ठीक है. इंडेस में 115 एंड 116 आर सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन यू कैन राइट सेकंड कैटेगरी में 16, इंडेस 16, दैट इज. And when I'm saying in day 16, so it means everything related to fixed assets. That includes intangible also, fixed assets also, impairment also. So everything related to that, right? So that is the second category. It is in day 16, in days 2, in days 12 on deferred tax asset liability, and in days 109. ठीक है. सो प्रिपेयर दीज वन वेरी वेरी थॉरोली. इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग्स होती है. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी इंडेक्स आपको पूरी तरह छोड़ के जाने हैं. इसके अलावा जो इंडेक्स है वो भी कवर करना है, लेकिन उनको बहुत सरफेस लेवल पे कवर करिए, राइट? सरफेस लेवल पे कैसे कवर करना है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट की, राइट? सो बोरिंग कॉस्ट में देयर इज जस्ट वन पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन बोरोइंग्स, जो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है. तो वो कवर कर लो. और डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो कि लग रहा है आपको कि उन्होंने फॉरेन से बोरोइंग्स करी होंगी, तो फिर उस पॉइंट को कवर करो. एक कंपनी है फॉर एग्जांपल विप्रो. विप्रो में आपको पता है देयर आर सो मेनी सेगमेंट ऑफ रिपोर्टिंग. आपको उनके हेड ऑफिस के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इसमें आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग भी पढ़ के जाना है.
सो डिपेंड करता है कि कौन सा कोई प्लांट लोकेशन है, वेदांता में आपको मिलेगी प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन में देर इज नो सच नहीं कि आप सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ो या आप कंसोलिडेशन पढ़ो, बिकॉज प्लांट लोकेशन है, राइट? देयर यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। सो समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द रोल ऑल्सो, बट प्राइमरली जो मैंने आपको फर्स्ट फेज के इंडेक्स बताए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग्स होती है, ठीक है? जैसे कि आज मैंने आपको बोला भी है कि आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, ठीक है? सो एक बार दिस वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड इन फर्स्ट 15 minutes, we will be taking some questions, right? Real questions that were asked in the previous rounds, right? So this is related to India's part. Okay. Uh, किसी कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो गवर्नमेंट ग्रांट ऑल्सो। तो दीज आर सम ऑफ दोज इंडेक्स जो आप बाद में देख सकते हो। तो फर्स्ट कैटेगरी में 115, 116, 16, 2, 12, 109, राइट? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग इन इंडेक्स को सबसे पहले देखो। उसमें भी 115 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स। मैक्सिमम जो ऑडिट में इंडस्ट्री में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो 115 पर ही हो रहे हैं, ठीक है? सो उसको प्रैक्टिकली थोरोली प्रिपेयर करिए। आई विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देन यू मे थिंक कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर। हमको तो पॉसिबिलिटी ज्यादा करके रिपोर्टिंग की दिख रही है, राइट? जब हम पीछे की स्लाइड पर जाते हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो कोई रोल दिख ही नहीं रहा है, केवल ट्रेजरी दिख रहा है और फंड रेजिंग दिख रहा है, लेकिन और एफपीएनए दिख रहा है, पर उसमें तो बहुत कम ओपनिंग्स होती हैं। तो फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा क्या है वो आप लोग समझिए। कई बार ये होता है कि 2 राउंड में होते हैं इंटरव्यूज। तो पहले एक सीनियर मैनेजर या एवीपी ले रहे हैं इंटरव्यू, और जो नेक्स्ट लेवल पे लेते हैं वो कई बार सीएफओ लेते हैं। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज अ 100% फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओनली। दे डू नॉट focus much on compliances like taxation, uh, reporting. They do not have much focus on that, right? So if you have a CFO round, so his focus will be purely on financial management. That's why you have to study financial management also. Now, what are the things that one should study? So ratio analysis, super important, right? Interpretation of various ratios, working capital management, right? Second important topic. Third is cost of capital. फोर्थ इज कैपिटल बजटिंग, राइट? सो ये 4 टॉपिक्स आप लोग बेयर मिनिमम प्रिपेयर करके जाइए इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री इंटरव्यू। रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट? दिस इज व्हाट सीएफओ नॉर्मली डील्स विथ, राइट? इन डे टू डे एक्टिविटी। अगर आप किसी स्टार्टअप के सीएफओ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो डू स्टडी वैल्यूएशन ऑल्सो। So valuation is also important for that particular interview. Right, this is clear to everyone. Now coming to third part, that is the और जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आप लोग भी नोट कर रहे हो, ऑल्दो इट्स अ रिवीजन फॉर यू पीपल, बट आई एम श्योर आप लोग भी उसको शॉर्ट में नोट करते जाओ, ठीक है? ऑल राइट। Now, if we'll talk about the direct taxation, so again, why direct taxation is important? Because there is a very, very less probability that they may ask you question on that. Industry में direct tax के questions होने की possibility कम है, लेकिन फिर भी आप लोग टीडीएस के sections देख के जाओ उसमें कम से कम, क्योंकि टीडीएस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जैसे कि लाइक एक एग्जांपल ले लो कि लाइक हिंडाल्को में आपने ज्वाइन करा, तो हिंडाल्को में आपको डे टू डे एक्टिविटी जो करनी है उसमें टीडीएस इज अ रेगुलर थिंग दैट नीड्स टू बी डन, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर। तो कौन सा नया सेक्शन आया है टीडीएस का मार्केट में, कोई बता सकते हैं? एनी न्यू सेक्शन? 190/40। 190/40, वेरी गुड आंसर, यस, लास्ट में भी यही आया। ओके, ऑलराइट। सो टीडीएस के सेक्शंस देख के जाइए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पीजीबीपी थोड़ा स्टडी करके जाओ। ओके, और कुछ टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस,
राइट. सो पीजीबीपी, डेप्रिसिएशन, टैक्स रेट्स, टीडीएस के रेट्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें आप लोग ब्रॉडली देख के जाओ. इंडस्ट्री के इंटरव्यू में आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। राइट, मैं आपको बता देता हूँ एक बार. ओके, सो इसमें से नोट कर लो आप. टैक्स रेट्स, कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स रेट कितना लगता है. ठीक है, दैट इज वन. सेकंड इज पीजीबीपी. ठीक है, देन डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा स्टडी करके जाइए, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं. डिविडेंड इनकम छोड़ दो. टीडीएस के न्यू सेक्शंस खास तौर पे, ऑल सेक्शंस, बट यस न्यू सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. टैक्स ऑडिट. ठीक है, टैक्स ऑडिट की few points. So this is an overview, right, that we have to take. Okay, एक म्यूट कर लीजिए प्लीज रश्मि. यस यस यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो ये क्लियर है आप लोगों को. डायरेक्ट टैक्स में दे विल नॉट आस्क टू मेनी थिंग्स. यस, डायरेक्ट टैक्स में दे विल नॉट आस्क टू मेनी थिंग्स. ठीक है, दे विल फोकस ओनली ऑन फ्यू पार्ट्स. ओके, बेसिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. राइट, बेसिक्स इनडायरेक्ट टैक्स के क्या कवर करने हैं आपको. राइट, जिन्होंने आर्टिकलशिप करी है इनडायरेक्ट टैक्स में, डेफिनेटली एक एडवांटेज तो रहेगा आपको. बट अगेन देर आर फ्यू थिंग्स दैट वन शुड स्टडी. और उसमें जो खास खास बातें वो है प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर विप्रोज इंटरव्यू, राइट, विप्रो का इंटरव्यू है, तो प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये स्टडी करके जाइए. ठीक है, इज इट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये स्टडी करके जाइए. एंड जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं दैट इज आईटीसी. आईटीसी क्रेडिट, जो उनकी सर्विसेज हैं वो ऐसा तो नहीं ब्लॉक क्रेडिट में आती है. ठीक है ना, तो दैट इज अनदर वन. तो ये कॉर्पोरेट के इंटरव्यू के लिए बेसिक्स पूछते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं. तो डीटी एंड आईटीटी के ये बेसिक्स आप लोग देखना. और खासतौर पे रिटर्न, जो आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं उनकी ड्यू डेट्स. ठीक है, तो मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है. आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट ऑफ डीटी आईडीटी विद यू पीपल. राइट, तो उसमें जितनी बातें हैं आपको केवल उतनी कवर करनी है, उसके उससे ज्यादा कवर करने का नॉट हेल्प यू टू मच. ठीक है, ऑल राइट. सो अभी तक जो चल रहा है उसको क्लियर हो रहा है आप लोगों को. एनी क्वेश्चन सो फार? क्लियर है. ऑल राइट, नाउ इफ वी मूव फर्दर, we if we talk about firms, right, these are the firms which are participating. ठीक है, अभी फर्म्स में सब मिक्स हैं. राइट, इंडियन फर्म्स हैं, ग्लोबल फर्म्स हैं, और बिग फोर्स हैं, बिग सिक्स हैं. एवरी फर्म इज देयर. राइट, सो ये सब फर्म्स हैं. देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, राइट, अगेन की फर्म्स में आप बैठोगे, क्योंकि इंडस्ट्री के बाद सेकंड जो बिग कैटेगरी है दैट इज फर्म्स. ठीक है, so in this one there could be all these profiles: stat audit, internal audit, system audit, forensic audit, SDC, GDC, right? Taxation. So again, there are a lot of different options which are available here. What we have to do here is again we have to understand the probability. क्या probability? वैसे तो बहुत cases में they normally tell you that what is the what is your profile. लेकिन कई बार कंपनीज बताती नहीं है. They say that it's a mixed role.
ओके, जैसे कि लाइक कुछ जो लोकल ऑडिट फॉर्म्स होती हैं, सिटी स्पेसिफिक ऑडिट फॉर्म, दे विल नॉट टेल यू कि लाइक आई एम कमिंग फॉर स्टेट ऑडिट, दे सी दैट आई एम कमिंग फॉर स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, एवरीथिंग. Okay, so in that case, definitely it's quite tricky that what should prepare. But 70% again, the possibilities of stat audit, right? So statutory audit के लिए अगर आप जा रहे हो for firms, whether it is global firm or whether it is Indian firm or whether it is mid-sized firms, right? Prepare Indians very well. जो Indians मैंने अभी बताया आपको, right? Prepare them very well. Apart from that, prepare ऑडिट टॉपिक्स. ठीक है, ऑडिट के मैं आपको टॉप 5 टॉपिक्स बोल देता हूँ. और फिर आई मीन अदर देन दो 5 टॉपिक्स, फ्यू अदर टॉपिक्स ऑल्सो, राइट? सो टॉप 5 अभी जो चल रहे हैं उसमें ऑडिट एजर्शंस, राइट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑडिट एजर्शंस, देन ऑडिट ओपिनियन, देन 6 पॉइंट्स ऑफ कारो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड की ऑडिट मैटर्स, राइट? सो ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा फिर नॉट लेस इंपॉर्टेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट, इफ आई वुड से इक्वली इंपॉर्टेंट इज दी the topics like how do you perform audit, how do you perform revenue audit, how do you perform, how will you check investments, how will you check bank balances, how will you check debtors. So this is a practical question that they are asking about 5 6 different line items. So prepare well for revenue, for fixed assets, for inventory, for investment, for loans and advances, and cash and bank balance, right? These 6 7 items one should prepare very well. So because they definitely have this doubt, उनको डाउट है कि आपने ऑडिट प्रैक्टिकली करा है नहीं करा. क्योंकि हर एक को स्टेट ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी को बैंक ऑडिट का होता है, किसी को इंटरनल ऑडिट का होता है, और किसी को स्टेट ऑडिट का होता है तो कंपनीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज का नहीं होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए स्टेट ऑडिट जो है उसको बहुत अच्छे से ये जो पॉइंट्स है जो मैंने बताया अभी आपको, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. ठीक है, सो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लियर है. अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ग्लोबल फर्म्स हैं, ईवाई, जीडीएस, पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, उसके लिए कुछ अलग प्रिपेयर करना है, कुछ अलग प्रिपेयर नहीं करना. और आप बोलोगे कि वो तो इंटरनेशनल ऑडिट होगा तो वो कुछ अलग होता है क्या? कुछ अलग नहीं होता है. सेम क्वेश्चंस जैसे यहाँ के टॉपिक्स हैं, ऑडिट एजर्शंस एंड ऑल, सेम आपको ग्लोबल में भी पूछेंगे. अगर आपको पूछते हैं कि आपको आईएफआरएस पता है क्या, आपको यूएस गैप पता है क्या, तो बोलोगे यस, इंडेस इज नाउ converged IFRS. So I have idea about that. ठीक है, तो कहने की बात ये है कि if it is a global firm also preparation is same, if it is Indian firm also preparation is same. ठीक है, बट अगर ये होता है कि आपको बोलते हैं कि स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू या स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू, तो फिर आपको उतना ही प्रिपेयर करना है. देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, राइट? इफ दे आर सेइंग कि डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू है, देन फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स. ओके, नाउ डायरेक्ट टैक्स के इंटरव्यू में इज इट कंपलसरी कि आपके पास आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस हो डीटी का? तो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि डीटी और आईडीटी बहुत स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, उसमें अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है तो बहुत मुश्किल आती है उसके आंसर्स देने में. ठीक है ना? तो यू हैव टू रीड टू मेनी थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर डायरेक्ट टैक्स, राइट? इट्स वेरी वास्ट, यू नो, आपने तो स्टडीज करी है, सो यू नो कि कितनी चीजें उसमें, राइट? सो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स है, एचएनआई टैक्स है, एनआरआई टैक्सेशन है, देन ट्रांसफर प्राइसिंग है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट भी अलग अलग है बिग फोर. तो जो भी डिपार्टमेंट का आपको इंटरव्यू कॉल आता है उसको फिर आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इसमें एक दो बातें जरूर मैं बोलूंगा आपको कि केस लॉज रेडी रखिएगा. जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में जा रहे हो तो एक दो केस लॉज रेडी रखो, ताकि अगर आपका वीक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा. ठीक है ना? हॉट केस लॉज पढ़ के जाओ, उसको डिस्कस करो वहां पे.
सेम गोज फॉर आईडीटी ऑल्सो। अगर आईडीटी का इंटरव्यू है, राइट, कोई भी मेजर जो केस लॉस है उनको बेस बना के इंटरव्यू में डिस्कशन करो। बिकॉज अगर वीक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, आप बोलोगे आई हैव फाइल्ड ओनली रिटर्न्स, राइट, देयर इज नो असेसमेंट, नो स्क्रूटनी, नो अपील्स, आई वाज नॉट इन्वॉल्व ऑन एनीथिंग, then they will not find I mean they won't find it too much interesting, right? केवल आपने अगर रिटर्न सिंपल फाइल करें तो ये प्रोफाइल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डू टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ, और प्रिपेयर करके जा सकते हो। कोई अपील का केस प्रिपेयर कर लो, डीटी के केस में, राइट, दैट यू गॉट अ डिमांड ऑफ सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट, यू कैन डेफिनेटली चेक विथ योर फर्म कि कुछ आपको आइडिया दे दें इस तरह का। तो पूरा केस प्रिपेयर करके जाओ अपील्स का, वो दैट दे अप्रिशिएट नॉट, बट ओनली इफ यू आर अपियरिंग फॉर फॉर्म्स, राइट, ये कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है जरूरी। अगर आप फॉर्म का टैक्स डिपार्ट ज्वाइन कर रहे हो वहीं के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई होप इट इज नॉट गोइंग टू टेक्निकल, यस एवरीवन इज विथ मी, राइट। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं? आर यू एबल टू कनेक्ट? यस, ओके, बढ़िया Yes, बात sir. है, ठीक है। चलो ग्रेट। अब तो वैसे भी आप लोगों को कैंपस जैसे जैसे पास में आता है, सबका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो भी 10 टाइम्स हो जाता है। तो ये भी एक बात है। ओके, देन टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के लिए कुछ प्रिपेयर एज सच बहुत टेक्निकल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। इंटरनल ऑडिट ऑडिट इज मोर अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट, एंड हाउ यू कैन आंसर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस लिख लो आप। P2P process. Almost every internal audit interview they do ask, what is P2P process? So P2P process is procure to pay process, right? Procure to pay process पूरी that is purchase process, right? अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, but just write it कि that you have to prepare that one, and also prepare a case where you find some revenue leakage or cost outage. आपने इंटरनल ऑडिट अगर करा है तो उसका एक एग्जांपल रेडी रख लो कि like this is the internal audit that I have performed and this is the leakage that I have found. That's all. Then they will uh, ask you some random questions. Random questions मतलब वो पूछ लें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं फिर आपसे। अब उसमें अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। उन्होंने पूछ लिया कि दैट देर इज अ I think that there is a fraud happening in the purchase department. That's the that management is thinking that there is a fraud happening. Now, how will you find out that fraud? अब आपको ऑन द स्पॉट आंसर करना है, इसका कोई सेट आंसर नहीं। ऑन द स्पॉट आंसर करिए। देयर इज अ फेक पेरोल गोइंग ऑन, राइट, पेरोल में फेक एम्प्लॉयज क्रिएट होके पेमेंट हो रहा है, राइट, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? अगेन ऑन द स्पॉट आंसर देना। तो कहने की बात ये है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें उसी मोमेंट पे आंसर देनी रहेगी। ऑल राइट, बट फिर भी कुछ सिनेरियोज जो स्टैंडर्ड सिनेरियोज है वो प्रिपेयर करके जा सकते हो, राइट। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। ऑडिट प्रोफाइल्स में, सॉरी, वेरियस फॉर्म्स में, राइट, यू विल बी अपियरिंग इन दीज फॉर्म्स, ठीक है। तो एक बार देख लो, अगर लग रहा है आपको कि यस ये पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ क्या पूछा जाता है या फिर क्या इसका प्रोफाइल होता है। आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ इट्स मिक्स्ड फॉर्म्स। ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल सारी ही कंपनीज दे आर बिग फोर्स। बहुत सारी इस बार मिड साइज फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड इज बैंक्स, ठीक है। तो एक हमने बात करी इंडस्ट्री की, राइट, दिस वन वाज इंडस्ट्री विच इज मैक्सिमम नंबर। सेकंड इज फर्म्स एंड थर्ड वन इज बैंक्स, ठीक है। तीन तीन कैटेगरीज की कंपनीज आ रही हैं, इंडस्ट्री, देन फर्म्स एंड देन बैंक्स। इसके अलावा जो कंपनीज है, राइट, वो अलग अलग टाइप की कंपनीज है, किसी में एक आ रही है, किसी में दो आ रही है, इस टाइप से। सो बट बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंक्स भी काफी आ रही है, जैसे कि एक्सिस बैंक, गोल्डमैन, एचएसबीसी, बार्कलेस, बैंक ऑफ अमेरिका, राइट, आईडीएफसी, देन
HSBC, ICICI होम फाइनेंस, राइट। इस बार सरप्राइजिंगली बहुत सालों बाद अ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक नहीं देखी है। मतलब मेरे ख्याल से पहला ही साल होगा, पहला ही अटेम्प्ट होगा ये, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट कमिंग, which is a big thing, right? But I have not seen the latest list. अभी जो 216 ये जो एनालिसिस है, ये 216 कंपनीज पे बना हुआ है, राइट। अभी कंपनीज 230 हो चुकी है, राइट। 14 मोर कंपनीज हैव बीन एडेड, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आईसीआईसीआई उसमें ऐड हुई, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब धीरे धीरे करके जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो शायद ही अब ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है बैंक्स की, इसमें दो तीन टाइप के बैंक्स देख रहे हो आप। एक है इंडियन बैंक्स, राइट, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, और फॉरेन बैंक्स। ऐसी तीन तरह की जो बैंकिंग है उसको, तो दे काउंट फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स, राइट। इसको डिफाइन करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि कौन सी कंपनी किस पर्टिकुलर रोल के लिए आती है। फिर भी एक ब्रॉड अगर एनालिसिस करते हैं तो इंडियन बैंक्स नॉर्मली क्रेडिट मैनेजर के लिए, अगेन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक दोनों रोल्स के लिए आती है, क्रेडिट के लिए भी आती है और उनके हेड ऑफिस के लिए भी वो कुछ लोगों को लेकर जाती है, ठीक है। फॉरेन बैंक की बात करें तो गोल्डमैन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो ये सब अलग अलग रोल्स हैं इसमें। कुछ प्रोडक्ट कंट्रोलर रोल्स होते हैं, कुछ के केस में इट इज बैक ऑफिस, ठीक है। तो it varies a lot, but primarily what do you need to do in these cases, right? कैसी भी बैंकिंग की प्रोफाइल हो, right? What you have to do is for SFM, we should study the key ratios which are important for from the point of view of lender. जो lenders होते हैं, right, जो लोन दे रहे हैं, बैंकर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर आप टर्म लोन दे रहे हो, तो टर्म लोन देने के लिए कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? इफ यू आर गिविंग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, देन व्हाट आर द रेशियोज दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू? Debt equity ratio, interest डेट coverage इक्विटी रेशियो, ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वेरी गुड। Yes, yeah. DSCR is one of the ratio, well done। EBITDA ratio. EBITDA is not that important because normally they give loan to those companies, term loan where the project has not yet started. Fixed asset ratio. Fixed assets, again, fixed asset is important. Yes, fixed asset is important, but that is fixed asset, total fixed asset upon total outside liability, right? Current ratio. Current ratio is important if you are giving a working capital loan, right? All right, good try. Is good answers, everyone. So what I'm just I'll come to the question answer now. So right now, what are the ratios which are important from lender's point of view, or one should understand that. Apart from that, what you should understand is the various products which are important, right? Just give you a few examples. Like yesterday, I was talking on fund accounting, right? So I was asking, what is the meaning of warrants? Warrant का क्या मतलब होता है, right? तो some of the students have given right answers, some could not give right answers, some give right answers but could not give the right answer regarding the journal entry of the same. So there are various products, right? Financial products, right? So it could be call option, it could be put option, it could be swap, it could be warrant, it could be bonds. So you have to study the basics of all this. I'm not saying that you have to read very detailed this thing, but at least you should know how bonds are valued. This is a very basic question, right? How bonds are valued. That's a basic question, right? Then you should understand this one. So various kind of products, and products are all this derivative products and the uh, debt products, bonds, debentures, like that. So one has to know accounting of this one. Okay. Second thing which you should prepare regarding products is uh, second thing which okay is
anyone having any question, then they can ask certainly. Okay, second point is the corporate actions. For example, buyback. Okay, why a company does buyback of shares, right? Why it does buyback and what is the impact on the share price? अगर कंपनी ने बायबैक करा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा शेयर प्राइस? ठीक है. So these are some of the things that you should prepare as far as banks interviews are concerned, because they come for a profile. For example, Goldman, I'm talking Goldman comes for a profile called as product controller. Now what is product controller? Product means financial products and controller means financial reporting. So financial reporting of financial products, that means product controller. So पहले you have to know what are financial products and then the accounting of the same. उसकी accounting कैसे करनी, bonus की accounting कैसे करनी, what will be the general entry that you will pass for bonus. So these are some of the questions that the banks will ask. And apart from that, some banking terminologies like SLR, CRR, repo rate, reverse repo rate, MCLR, MIBOR, LIBOR, राइट? ये सब जो टर्म्स है जो जनरल बैंकिंग में चलती है, और उसके एक बेंचमार्क रेट्स कितना चल रहा है, जैसे रेपो रेट फॉर एग्जांपल अभी कितना चल रहा है रेपो रेट, दैट यू शुड रिमेंबर, राइट? सो दिस इज ब्रॉडली फॉर बैंक्स. यस, तो ये तीनों जो ब्रॉड कैटेगरीज है अभी, लाइक आई हैव कवर्ड ऑल दिस वन. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, राइट? आई होप इट्स नॉट too fast, right? Everyone must have noted down the important things, right? Whether it is industry, right? This is the breakup, broad breakup, which I was showing to you from the beginning. Firms, industry, and when I'm saying firms, so global firms also, big four, big six also. And when I'm talking about banks, so it's Indian bank, foreign bank, and cooperative banks also. सो इट लुक्स लाइक कि हम लोगों को पढ़ना बहुत है, लेकिन अगर आप उसको देखते हो तो बहुत ही स्पेसिफिक स्टडीज, बहुत ज्यादा ऐसा आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, राइट? सो आई एम श्योर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चंस एंड आंसर्स राउंड. सर जैसे 115 में आपने बोला था कि 5 स्टेप मॉडल इम्पोर्टेंट है और दो हम्म. चार टॉपिक्स और बताए थे, तो वैसे सर 116 में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें प्रायोरिटी पे करना चाहिए, क्योंकि 116 भी बहुत बड़ा है, तो हम्म. उसमें कोई ऐसे टॉपिक्स जो हमें पहले कवर कर लेना चाहिए? 116 में नहीं, देखो 116 में भी लाइक व्हाट आई हैव कवर्ड द क्लास वही प्रिपेयर करो आप. जैसे वापस में एक बार रिपीट कर देता हूँ, द कंडीशंस ऑफ ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, when you will recognize finance lease, right? That's a very important question. Accounting in the books of लेसी, लेसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसी की बुक्स में, बोथ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज के केस में, राइट? डिस्काउंटिंग रेट, वो क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा भी आपसे. देन शॉर्ट क्वेश्चन ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, राइट? और फिर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे रिगार्डिंग दी what was that, deposit, Percentage of revenue of deposit. a security deposit. If the lessee has given a security deposit, so that one, right? So probably what I believe is these 6 7 questions are getting repeated every time. Okay, so we have covered I think all these 6 7 questions in the class. तो जो मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट है, तो हाँ. उसमें ओनली हमें मतलब ओनली बेसिक बेसिक करना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन कौन से होते हैं या उसकी ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो पूरा सब कुछ? ट्रीटमेंट देख के जाओ थोड़ा उसका, ठीक है? मॉडिफिकेशन पे मतलब अभी तक इतना ज्यादा तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी लाइक वंस यू आर डन विद दीज वंस देन मूव ऑन टू दैट एज वेल, ठीक है? तो यू आर राइट, 115 एंड 116 आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है? 115 का डू वी नीड टू प्रिपेयर लॉ एज वेल फॉर इंडस्ट्री? नहीं, लॉ आपको प्रिपेयर नहीं करना है, केवल वो पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं लॉ के जो कारों में आते हैं, और वो भी ऑडिट फॉर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है? इंडस्ट्री के लिए तो मैंने जो आपको 4 टॉपिक्स बताए वो इंपॉर्टेंट है.
कॉस्ट थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो। ओके, थोड़ा बहुत कॉस्ट मतलब एटलीस्ट मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उनके मीनिंग्स देख के जा सकते हो। ओके, लॉ प्रिपेयर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है 115 के? 115 ऐसे देखा जाए, देखो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर भी अगर आपको मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस, वो इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाकी इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? अगर हम लोग थियोरेटिकली बात करें और प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत अंतर हो जाता है। फिर भी लाइक ये तीन बातें आप एटलीस्ट अच्छे से देख के जाओ, जो भी। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यस। सर बिग फोर में एक ये वाला भी होता है कि वो लोग हायर करते हैं और उसके बाद डिप्लॉय कर देते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को। तो उसके लिए मतलब फिर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है या फिर फॉर्म के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं नहीं, अगर बिग फोर हायर कर रही है तो फॉर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है ना? ओके, सुपर सुपर, ठीक है। सर हम्म। सर जैसे आईसीआईसी बैंक है उसमें क्रेडिट मैनेजर के लिए और यदि इंटरव्यू होगा तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना रहेगा क्या? आईसीआईसीआई बैंक में? हाँ सर। आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट मैनेजर के लिए देखो, अगेन डिपेंड करता है कॉर्पोरेट लोन है या रिटेल लोन है। कॉर्पोरेट और लोन है तो पूरे पोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बोला था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए देखो, अगेन उसके लिए वो रोल अलग है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जॉब डिस्क्रिप्शन लो उनसे कि लाइक कौन सा पोर्टफोलियो हमको हैंडल करने के लिए देना है। क्योंकि इसमें भी अलग अलग हो जाता है, इसमें भी कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो अलग होता है। ठीक है। तो कई बार हम लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट, क्रेडिट मैनेजमेंट। So always do ask for the job description if it is not very clear. ओके सर। और नहीं अभी मेरे पास कॉल आया था सर मैम का तो उन्होंने बताया था मुझे तो उन्होंने बोला कि आगे आपका सीवी फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर उस हिसाब से इंटरव्यू देना रहेगा मुझे। हाँ, आप एक बार उनसे बोलो कि लाइक उसका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन हो तो भेज दें। और अदरवाइज अगर कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मैंने जो अभी आपको पॉइंट्स बताए ना, की रेशियोज यस while सर। providing loans, and second is key terminologies apart and products, right? So ओके आप तो सर। खैर रेगुलर क्लास में आते ही हो, तो यू विल गेट ऑल दी बैंकिंग रिलेटेड मटेरियल, राइट? जस्ट रीड थ्रू दैट वन। ठीक है। ओके सर। और सर एक दो क्वेश्चन है। और जो हाँ हमारे हाँ। सीनियर्स है वो सब बोलते हैं कि फर्म जो रहती है सीए फर्म में यदि आपको जाना रहता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो फिर वो ऑप्शन रहना चाहिए कि नहीं है सर? वो बोल रहे कि इससे अच्छा तो आईटी जैसे एसेंशियल वगैरह है इसमें चले जाओ आप तो वहाँ पे ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है तो फिर ये फॉर्म वाला ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं? ओके ओके, तो वो क्वेश्चन अभी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं, राइट? मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं करियर में। केवल वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि सबके लिए अलग अलग आंसर है, राइट? सम प्रेफर वर्क लाइफ बैलेंस, सम डू नॉट, सम यस सर। फोकस ऑन मनी, सम फोकस ऑन प्रोफाइल, सम नीड होम टाउन, सम नीड, तो ये वन टू वन डिस्कशन ज्यादा बेटर है करियर रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Sir, I Sir, have a हाँ, बोलिए अंकुश। sir, if I want to go in equity research analyst or portfolio management or any other mutual fund house or IB, so financial modeling course is also mandatory to pursue, or without that also they can hire us. They can certainly hire you, right? That's not a prerequisite, because you have cleared SFM, right? Strategic financial management. That is what they look for. Okay, So a lot of people are there who have not done financial modeling, but yes, definitely they expect you to have good understanding of valuations. So just valid. read through various methods of valuation. That is sufficient. Sir, but during the articleship period, I am not having any exposure regarding valuation or anything. All right. So that is something that you have to study, right? In the class,
definitely we do conduct 2 sessions on valuation. Hmm. So if you are looking for that, you can definitely drop a message to our office for the recorded ones, Okay, sir. right? Okay. Okay, great. Sir, I और क्या have a कुछ? doubt. हाँ बोलिए. Sir, in the campus, there is psychometric test, written test, and group discussion. What is this written test all about, sir? Written test and psychometric test sometimes are interchangeable terms, right? But broadly, they conduct aptitude plus subject-related test. Aptitude is logical reasoning, maths, English, and subject is Hmm. all this one: direct, indirect tax, revenue, and all. Sorry, Indies and all. Okay, that's what comes in the written test, right, sir? Right. It's both MCQ based. Okay. Thank you, sir. All right, welcome. Does it happen that once they shortlist you and you give the consent, but still they don't call you and out for the interview? Yes, this has happened, right? This is a possibility, right? So they may shortlist you, but still, if they get the sufficient number of uh, candidates, right? So it's a possibility that they may not call you for interview. Okay. All right. Okay, great. So these are some of the questions that you people have. Okay, अब हम लोग अभी आपके questions हो गए. Now it's my turn, right? Now I'll ask you questions. ठीक है. So you people ready with the questions and answers round? बोलिए. Yes, sir. All right, fantastic. So do not worry that I will ask each one of you, right? I will ask only those who will raise their hands, right? That's and definitely like there are so many people who are there. So asking each one of you is certainly not possible. Okay, so whoever will raise their hands, right? They will get the first chance. Now, whoever is raising their hand, it's not only about just one answer. You have to. I will be doing kind of a question answer round with you. So you will give me answer again. I will ask you cross questions. Clear है? So you will get a feel about how the interviews gets conducted, right? All right, so great. Let me start uh, with the first one. Okay, so the most important thing is the Index 115, right? Index 115, as I already mentioned, that's very, very important. Okay. And again, I would request everyone if they can turn on their videos, right? If you are answering, definitely answer by turning on your videos, right? So everyone, please turn on. Okay, yes, everyone, please turn on your videos. All right. Especially like those who are going to give answer, right? Who would like to give answer on it is 115? Yes. Who is confident that yes, I'm super confident about 115. I can definitely give the answer. Okay, and this is because it's the first question. Certainly, you will get the prize for the same. Right? This is the first question, 100%. You will have prize. All right, should be well done. Okay, good job. Okay, great. So Indies-based questions. First, we are talking about the question number one, right? The question first is, if there is a health club, you are doing the revenue accounting for that health club, and the membership fees is 12,000 for 1 month. They have given a free promotion to all residents, right? How much revenue you will recognize at the end of the month, right? Please understand my question first.
the club has you have utilized the club for the entire 1 month, right? Now, whether that club should recognize that 1 month revenue or not, or if they will recognize, will they recognize it afterwards because the club has completed their performance obligation. Okay. So as per India's 115 revenue recognition, there are few conditions to recognize a contract as a contract under 115, and one of the condition is payment term should be identified and customer should be committed to purchase the goods or services. And in the initial and in the first month, since the payment terms are not identified and customer is not committed till completion of 1 month, after that they have an option either to continue the services or not. So I think they should not recognize the revenue for 1 month. Three But separate. the company has fulfilled their performance obligation. Then also they should Also, not recognize. so it depends. It will depend on the condition. Whether they consider the one free month also a part of that contract or not. I think. No, they said that it's free for you, right? Yes. It's a free membership. 1 month off, you can use that. Then I But think they sorry. then, Then I think they should then the entity should not record the revenue since the payment terms are not identified for that particular month. all right, very good. Okay, great. Anyone is having any other answer to that question? Yes, any further answer? All right. Okay, great. Good job, Surbi. Yes, you are 100% right on that. Okay, oh, sorry, some people have raised their hands also. I missed it out. Okay, yeah. Shriram, you wanted to say something? Yeah, actually, if the health club provide free for 1 month, they have to recognize the revenue rate. 12,000 divided by 12, 1 month for 1,000 each, right? No, no, no. Basically, 12,000. Uh, 12,000 will start once the 1 month will end, right? So for the first month, the it's for free, right? Okay. So the customer can terminate at any point of time, and then there is no obligation on the customer that they have to actually opt for that membership. So it doesn't satisfy the first condition, that is identifying the contract. Identifying the contract says that there has to be a probable consideration that the entity should receive, Okay. but there is no probable consideration in this particular case, so it doesn't satisfy the first condition itself, and hence no revenue will be recognized in this particular case, right? Okay, good try, both of you. Yes, but yeah, if we'll take the right answer, yes, so you given it right. But yeah, definitely one should not hesitate to answer because there is no negative marks, right? What you will get at the end of the day is, I mean, some feedback, right? Okay, so even if you're wrong, right, no worries to try. All right, chaliye. So this is the question number one. Second question is again for India's 115, right? Now, who would like to answer that? Swati. All right, very good. All right, so goods are dispatched on 31st March and will reach buyer's place on 5th of April. In which year revenue should be recognized? Previous year or current year? Swati, take your time, not rush. Sir, as per India's 115, we will record the revenue next year because there are certain conditions under India's 115 revenue from contact with customers. उसमें ये condition है कि goods should reach the buyer's place and goods should not be in the possession of the company. That's why we will recognize the revenue next year.
All right. Okay, 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 okay. All right. That's one answer. Rishabh, what's your answer? So goods must be first we will be studying the terms like whether it is in FOB or it's second terms are just CIF. FOB and CIF, right? So if it's on CIF or it's on FOB, even if it is on FOB, we will see that whether the consideration, whether the company is expecting that it will receive the entire amount of consideration. If it is highly probable, then it should record in the previous year. Otherwise, uh, it will vary from case to case. If it is not probable, then it won't recognize the revenue. All right, very good answer. Perfect answer. Right. Yes, this is the right answer. That this depends on the conditions. Right. It depends on if once the goods are dispatched from the factory gate, whose responsibility is that? From in the transit responsibility. Transit responsibility अगर buyer की है, तो फिर the seller will recognize it immediately. But transit की responsibility अगर seller की है, then the seller will recognize it on 5th of April because the performance obligation will be fulfilled on 5th of April. Right? क्लियर है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेना है क्वेश्चन. दीज टू आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है. ग्रेट. गुड आंसर. राइट. Okay, superb. Next again is from 115. Yes, now who would like to answer? Some new people, those who have not yet answered, right? Shruti, yes. So this is a bit lengthy question, but I would suggest everyone that just take a snapshot of this one. I'm not asking this question because it's थोड़ा lengthy question है. इसका एक snapshot ले लो और just do it yourself because it's again important one. In this one, you have to compute the performance obligation, right? This one, yes, Shruti, you have to answer this one. Person checks in the hotel on 20th March and checks out on 4th April. Invoice is raised on 4th April. Revenue shall be recognized in previous year or current year. Sir, one of the condition that company the performance obligation should be satisfied. In this case, performance obligation is satisfying on the 4th April, and in but invoices the company has raised in but hotel has raised invoice on 4th April. That means company will receive the payment after 4th April. Then if a company is confident that the customer will pay the payment on 4th April, then it will recognize the revenue on 4th April. On that date, both the conditions will be recognized. First is performance obligation is satisfied, and second, company is confident that customer will make the payment. All right. So you mean to say that they should recognize on 4th of April, right? Yes. Because the performance obligation is getting fulfilled on 4th April, correct? Yes. Okay. All right. Good try. Okay, Yash, आप बताएं. Yes, you have answer. So since it is a single series of a transaction, so every day he satisfy his performance obligation. So from 20th March to 31st March, record the revenue in the month of March on the daily basis, and till from 1st of April to 4th of April will recognize on 4th. All right. All right. Good try. But I think this is a better answer. But the only thing you have to add in this one that if you are recognizing in the previous year, 20th March to 31st March, then there has to be a certainty of collection, right? Either you have taken some deposit from the customer or you have some legal right to receive that consideration. So in every case, right, always remember that in a series of transactions, the revenue is generally recognized over a period of time, not at a point in time, right? So that is what the answer is for this particular question, right? Okay, good answer. Okay, superb. So we have, so that's why I have kept almost 3-4 questions on 115 because you should understand
that this is something which is frequently asked, right? So there are almost 15-20 scenarios that builds up this case. What I'm asking right now is only 4-5 ones. Okay, let's take this one more question on that. So this is the last question on Ind AS 115. Okay, who would like to answer? Achal, yes. Yes, sir. So as per Index 115, one of the condition is that payment terms is to be identified. And here, the one minute, sir. The person got bankrupt, so payment terms will not be identified and hence no revenue to be recognized. Payment terms are not identified in this case. Okay, all right. Okay, any other answer? Yes, in that also, sir, there should be intention and ability to pay of the customer, and it is not there. So I think no revenue is to be recognized. And if the billing is done and the customer has got bankrupt, Then also, sir, revenue recognize नहीं होगा. बिलिंग हो जाएगी फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है. All right, good try. Yes, let's take one more answer. Who's going to answer? अब तो क्वेश्चन देख लिया है आपने, अब तो yes, you should try. Yes, who would like to answer this? Let's have some new people in the house. Aditi, yes. And कोशिश करें if you can turn on your video also. Yes. सर बिफोर बिलिंग अगर कस्टमर के रिकॉग्नाइज करे Sorry, वापस बोलिए. कस्टमर बिलिंग होने के पहले कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है तो उस रेवेन्यू हाँ. रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पर आफ्टर बिलिंग अगर हो चुकी है तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बाद में वो रिवर्स होगा क्योंकि हमें कंडीशन पहले से नहीं पता थी कि पर्सन बैंकरप्ट हो जाएगा. रेवेन्यू आप रिवर्स कर सकते हो क्या? पर सर इन दिस केस करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन हमें पहले से नहीं पता थी. इसमें विलिंगनेस हमें पहले तो मतलब पहले यही पता होगा कि कस्टमर विल पे, देन आफ्टर समटाइम्स वी नो दैट कस्टमर गॉट बैंकरप्ट. No, my question to you is you're saying that आपने बिलिंग कर लिया है और बिलिंग के बाद आपको पता चला है कस्टमर हैज गॉट बैंकरप्ट, तो यू विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू और यू विल नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? यस, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. ओके, फिर बाद में पता चलता है कि दे बिकम बैंकरप्ट, तो फिर क्या करेंगे? देन वी विल रिवर्स इट. यू विल रिवर्स द रेवेन्यू? बट यस सर, रेवेन्यू रिवर्स होगा क्योंकि अब तो ऑलराइट. पैसे ओके ओके ओके, चलो. सो एक फाइनल आंसर और ले लेते हैं इसमें. यस, हु वुड लाइक टू गिव द फाइनल? साक्षी, बोलिए. Sir, I believe that if we have billed and post that we got to know that the customer has gone bankrupt, then we would recognize the revenue. However, it is kind of a loss to us that the customer has gone bankrupt, so we'd consider it as a loss or kind of like bad debts. Yes, 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 yes. Okay. So let me conclude this particular point. Okay. So the point is that in this particular case, what you are seeing on the screen, that the before the billing is made, no revenue will be recognized. Right. So Anchal, you were right up to that point. No revenue will be recognized if the billing is not done, because there is no legal certainty you have to claim that you have provided services, right? So there is no certainty of collection because before the billing that has got bankrupt. After the billing, you have the legal right, right? So definitely you will recognize the revenue because billing is done. You have the legal right to that. And if the person has got bankrupt, definitely it's the same treatment that you do normally for debtors. It has become your debtor. Now write it off or have provision for doubtful debts. Right? Why are you reversing the revenue? Right? Okay, so वहां पे थोड़ी गलती करी आपने. Otherwise your answer was good. ठीक है Aditi? All right. So this particular question answer is fine, right? So there are four questions related to Ind AS 115. I would again suggest everyone
that these are the questions, similar questions you are going to 100% face in the interview round. Okay, so prepare for this 115 very well. All right, now coming to some new questions, right? What is the new question? Now this is related to deferred tax asset. Who would like to answer related to deferred tax asset? Tax experts in the house? Yes, Pragya. Yes, anyone? DTA. Pragya, all right, very good. Okay. So Flipkart, as you know, is in losses for last many years, right? And there are no foreseeable future profits up to next 8 years. Will you create DTA in this particular case? So, as per Ind AS 12, there are conditions for creation of deferred tax assets. And the condition states that if the company is not having any future foreseeable profits or is not able to generate any future profits, so we'll not create DTA. Also, if DTA is created, it can be carried forward up to a period of 8 years. So, in the particular scenario, the Flipkart is seeing no foreseeable future profits for the next 8 years. So even if the company will create DTA, it will not be able to reverse it, and after 8 years, it will not the company will not be able to carry forward. So DTA will not be created in this case. All right. Okay. Perfect answer, right? So this is definitely a very tricky question. Okay. This I covered in the class. I happy that you have remembered that. Okay. So the tricky question. Okay. So you will not create DTA even if you will have profits after 8 years. Right? Next 8 years तक losses है और 9th ईयर से प्रॉफिट भी आएगा तब भी DTA नहीं बनाएंगे. ठीक है. So अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो just recall it because this topic is something very important. ओके. सो देख लें अभी तक कितने लोगों ने कौन कौन से आंसर्स दिए हैं, राइट? सर एक क्वेरी है. एक मिनट पहले एक बार जरा दिखा देता हूं मैं कि किसने सही सही आंसर्स दिए हैं. ठीक है, सुरभि, ऋषभ, यश, साक्षी एंड प्रज्ञा, राइट? तो बाकी लोग भी यस थोड़ा डर के आगे जीत है. यस, इंटरव्यू के आगे CTC है. ठीक है, तो जिन गलत व सही हो आंसर तो देना ही है आपको इंटरव्यू में. तो आप लोग, अच्छी बात है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी. यस, एवरीवन शुड डू दैट. ओके, जिन लोगों ने खास तौर पे अभी पढ़ाई करी है, राइट, दे शुड आल्सो चेक देयर कॉन्सेप्ट्स दैट वेदर आई एम गिविंग राइट आंसर, रॉन्ग आंसर. हाँ, बोलिए ऋषभ. सर जैसे कोई भी आंसर देते टाइम मैंने प्रज्ञा को नोटिस किया, सुरभि को नोटिस किया, वो लोग हाँ, ऐसे रेफरेंस देते हैं कि एज पर इन डेज देयर आर 5 कंडीशन एंड वो लोग एक एक लिस्ट डाउन करते हैं. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बट ऐसे अगर किसी को रिकॉल नहीं हो रहा लेकिन वो आंसर जानता है, वो क्रक्स बता सकता है, तो क्या हम्म. वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज में डाल देगा क्या मेरे को? बहुत लंबा आंसर नहीं देना है, बस जैसे इन्होंने दिया है शॉर्ट रेफरेंस दिया है, शॉर्ट रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक पूरी 115 की 5 स्टेप्स की पूरी कहानी कोई सुना रहे. वो इंटरव्यूअर को बोर कर देगा, राइट? सो उतना लंबा आंसर मत दो. एक रेफरेंस, छोटा सा रेफरेंस दे सकते हो, दैट वुड बी फाइन. ओके सर. ठीक है. ऑल राइट, ग्रेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट. ओके, गवर्नमेंट ग्रांट किसने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है, लेकिन हु वुड लाइक टू आंसर? यस, सम न्यू हैंड्स. ये जितने लोगों ने आंसर दिया उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आए. और मैं एक बात बता देता हूँ आप सब लोगों को कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं करा है. ठीक है, तो इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए नया क्वेश्चन है. Everyone in the this session, this is new for everyone, so you can answer, right, if you want. All right, again same hands almost, but okay, so I'll take the answer from uh, okay, so किससे लें? Yes, श्रुति. Okay, बताइए.
if the government has provided a free advertisement space to a person as part of government grant, what entry they should make? Okay, क्या क्वेश्चन है? If the government has provided a free advertisement space to a person मतलब to a company, right, as part of government grant. Sir, if company has got this grant, free grant, then company has two option. It can record this asset at a nominal cost, or we can say like 1 rupee is something. Or if the government, if this grant is for, sorry, I'm not able to recall the concept, but there are two concepts like company can record it in the books of accounts, or a company can also record the grant, and the next side it will recognize the deferred revenue. Okay, so but this is an advertisement space that you got, right? Not an asset. I hope Okay, you okay. are clear about that, right? It's not an asset that you're getting. It's you're just getting a space, which is kind of an revenue expenditure for the company. Yes, sir. So I think my second answer is somewhat correct. Like entity will record the deferred revenue, and year on year it will reverse that. It will recognize the What revenue, is the and entry? What will be the general entry for the same? revenue would entry would be sorry, sir. Like, I am able to connect, like deferred revenue would be credited because it would be a liability, but I'm not able to connect with what should be debit Okay, in. all right, no problem, no problem. But good try. Yes, a very good try. Yes, Rajni, you would like to answer? What entry they should make? Yes, sir. If the conditions are attached with the advertisement, and if we are feeling that we are able to meet up with the conditions, then we can recognize it over the years. If it is like for the 5 years or something like that, then we will recognize it after 5 years. And if we are feeling that No, 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 we no, will no, be no, able no. to, So there is some misconfusion, right? We are talking about government grant, right? And not revenue. it is not related with the conditions or like that. The question is related to government grant, right? They have given you a free space for advertisement, putting your holding over there, right? That's the question. Yes, Sriram, you try, please. Sir, actually, if a government provide grant, which is quantifiable, hence we can account. Since it is expenses, we should only disclose that. I think it is not. It is covered under government grant in Ind AS, but it should be disclosed, not to be accounted. I think so. All right. Okay. Yeah. Okay. So there are definitely this. You given good answers, all three of you. But the right answer to that is that, see, it's not nowhere it is mentioned that it is for multiple years or for one particular year. Even if it is for 1 year or multiple years, the answer would be same, right? So you got the advertisement space. अगर if you would not have got that space, तो फिर क्या एंट्री करते हैं? तो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री होती है. अभी क्या करेंगे एंट्री, क्योंकि हमको कुछ भी पे नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट ने फ्री दे दिया है, तब भी दिखाना तो पड़ेगा. तो इसलिए आप क्या करोगे, नॉमिनल नॉमिनल अमाउंट पे उसकी एंट्री कर दोगे, जस्ट टू डिस्क्लोज दैट यू गॉट समथिंग. सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एट 1 रुपी नॉमिनल अमाउंट. ठीक है, ताकि आपको एक बार का डिस्क्लोजर हो जाएगा एक तरह से. आई थिंक श्रीराम यू हैव गिवन सम दैट काइंड ऑफ आंसर ओनली. ओके, गुड ट्राई. बाकी कंफ्यूजन मत रखिए इसमें. यस, इफ यू आर आंसर ट्राइंग टू आंसर, ओके, आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं. ओके, बट एनीवेज, फैंटास्टिक. ओके,
जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट अरेंजमेंट, ये पढ़ के जाइएगा, राइट? आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट, बट इस पे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दैट. सो जस्ट रीड इट आउट एज पर योर कन्वीनियंस. जेवी, जेओ और जॉइंट अरेंजमेंट, राइट? इसके बारे में बेसिक्स पढ़ के जाइएगा. राइट, नाउ नेक्स्ट लीजेस. लीज के ऊपर कौन आंसर करेंगे? who would like to give answer on lease? Yes, everyone. New hands, right? Okay, don't worry. गलत हो तो गलत हो, क्या फर्क पड़ रहा है? Yes. All right. Uh, we have got same hands. Should we? Yes, someone else also should try. बाकी लोगों ने भी पढ़ा है. There are other people also in the class. ठीक है, उन जानता हूँ आप लोगों ने भी पढ़ा है, right? So why not raising hands? आनंद, मनीष, आकांक्षा. Yes, आकांक्षा. All right. चलिए, so we'll take answer from Pragya. What is IBR in lease accounting? IBR is incremental borrowing rate, which is used to discount the lease, which is used in lease accounting when we book ROU asset. And the preference is, I think, first is IRR, implicit rate of return, and then the second preference is IBR while accounting. All right, and what IBR means? Not the full form. This is the I'm actually not able to recall exact what is the meaning of IBR. That is the question, right? Not the full form. But good try. Okay, good try. All right. Anyone else who would like to answer this? Yeah, Someshwar. Hello, sir. Incremental borrowing rate is nothing but the rate at which the borrower can buy more funds. Borrower can buy more funds. All right. Not a very clear answer. Okay. Aditi, Market rate of IBR market is a, market rate. Not again very clear answer. Surbhi. yes, sir. It is a market rate where we borrow other funds. All right. IBR क्या है? तो आप लोगों को पूरा बताना है, राइट? नॉट ओनली मार्केट रेट, नॉट ओनली बोरोइंग रेट, नॉट लाइक दैट. So may I try? हाँ, बोलिए. The IBR, that is incremental borrowing rate, is the rate of interest at which lessee will borrow the funds from the market equal to value of the asset. हाँ, something like that. Lessee, it's the lessee's borrowing rate. If the lessee would have borrowed the money from the market to buy a similar asset that lessee has taken on rent, that is the incremental borrowing rate. So एक तो ये बोलना है आपको कि it is lessee's borrowing rate. Okay, not only borrowing rate, and which borrowing rate that it would have taken the loan from the market. Okay, so give a complete answer. Okay, अभी आप लोग के answers are not full-fledged answer. Okay, but yeah, good try. Okay, great. So these are about the index related questions. एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन let's restrict ourselves now. So we will take maybe 3-4 more questions. One is on audit, right? So who are the experts in the audit field? पहले hand raise कर दो, फिर I'll ask the question. New people in the house. Nandini, okay, yes, Nandini. Management is not ready for impairment of 1 crore of assets in a total gross block of 50 crore of assets. What kind of audit opinion should be provided? Nandini. Sir, I think
if 1 crore is substantial, then we'll provide a modified opinion, that is a qualified opinion. All right. Okay, good try. Okay, who would like to give answer now? Now everyone knows the question. Okay, new people. अब तो क्वेश्चन देख लिया आपने ना, अब तो आंसर आप दे सकते हो. Yes. सर मैं बताऊं. हाँ बोलिए. Sir, first of all, we have to know about our maturity level. Hmm. If these are material Mm-hmm. and not pervasive, then we Hmm. should qualify our opinion. If these are material as well as pervasive, then we qualified as adverse our opinion. Perfect answer, right? There is nothing uh, to get confused here. Yes, he's given a perfect answer. Simple answer, Sir, right? is EOM will not do the work here? No, no, this is for audit opinion, right? So that will be in the context of reporting. So when we are talking about audit opinion, yes, it will be based on material and pervasive and material and not pervasive. So because we do not know that it is material or pervasive also, we have to take an assumption कि like हो सकता है pervasive भी. Then we will give you adverse opinion. Otherwise, we will give you only audit, qualified opinion. And if the materiality is also not met, right? If 1 crore is not material, because you do not know how much is the materiality level. So material भी नहीं है अगर, then definitely we may discuss with the management, and we might give uh, emphasis on I mean EOM parameter, we can give an entry to that. ठीक है, if it is not material बट also. सर ये जो ग्रॉस ब्लॉक है वो तो 50 करोड़ का है, तो उसमें 1 करोड़ तो मटेरियल नहीं होगा ना. We do not know the materiality level. It is almost what is the materiality level, because we do not know that. Okay. तो सर अमाउंट बेस पे हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, वो जब तक पता नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मर्टिलिटी लेवल रेवेन्यू पे सेट. ठीक है, दैट वे. ऑल सर राइट. एक चीज ऐड करें. हाँ बोलिए. उन्हीं के लिए जो ये डाउट पूछिए ना कि हमको कैसे पता चलेगा. तो मेरे हाँ टीचर ने इसलिए किया था जब मैं ऑडिट पढ़ता था हाँ कि बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स में एक सॉफ्टवेयर होता है जो मटेरियलिटी का लेवल निकालता है. हाँ. तो अपने को तो डिटरमाइन करना ही नहीं होता प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग. इट्स अ सॉफ्टवेयर टास्क. तो बट हर 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 जगह नहीं होता है वो सॉफ्टवेयर. लाइक दैट्स इन द लॉ, द बिग फर्म्स दैट इज देयर, and you have to give the logics right in that software also, so we should know what those logics are. So I think the right answer would be that we do not know at this moment, right? क्योंकि अगर आपने ये बोला ना कि like it's the software that generates, तो वो आप फंस जाओगे उस आंसर में. Because then they will say कि okay, then you do not know what is the logics set for the materiality, right? इसलिए मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ आपको कि वो आंसर सही नहीं है. ओके सर. ओके ग्रेट. नाउ थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे. ठीक है, क्विक क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हु आर गुड इन डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा मार्केट से जो लोग डील करते हैं, मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, यस, कौन लोग हैं जो आंसर दे सकते हैं वाला? एनीवन? Rajat. Okay, Rajat has raised the hand. Nice. Before the budget, you know that budget is coming on 1st of Feb. What kind of positions or derivative trader should take and why? Buy, sell, put, call, क्या करेंगे उसमें before budget? Yes, Rajat. Okay, Parth. सर वो लोग इन द मनी एट द मनी के कॉल पे लॉन्ग जा सकते हैं, पुट और कॉल दोनों में.
अगर बजट का डिसीजन बहुत डाउन होगा तो डाउन साइड पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा एंड कॉल कंपेंसेट हो जाएगा। मीन्स लॉन्ग करना चाहिए। अरे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं सर, शॉर्ट नहीं करना चाहिए बजट के Why? टाइम पे। बिकॉज हैवी सेलर को तो हैवी नुकसान हो सकता है अनलिमिटेड। वो कितना भी डाउन जा सकता है, 2000 Very good. पॉइंट 3। Perfect, perfect, perfect. Right. Perfect answer. Right. Basically, the answer to this question is that because the budget will lead to volatility in the market, but we do not know which side. It may go down, it may go up drastically. So there will be a heavy movement coming. So in that case, it's always good to buy, have a long position. Because if you will have short position, then there could be unlimited loss, right? Or buy position, you will have unlimited profits and limited loss, right? So very good answer, perfect. Okay, not expecting this answer from you, but I mean in the class because very few people does trading, but good answer. All right. Okay, एट द so मनी ऑप्शंस लेंगे, एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे कि आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वॉलेटिलिटी है ना, तो एट द मनी तो फिर एट द मनी फ्लक्चुएट हो ज्यादा सकता सही है। है। एट द मनी, एट द मनी, इन द मनी भी ले सकते हैं, आउट दोनों ऑफ ले मनी सकते भी ले सकते हो, ऐसा कुछ हैं। नहीं है। आउट ऑफ द प्रीमियम कम मनी, होगा। हाँ, फिर वो शुड नॉट बी लाइक टू फार बहुत आउट। दूर नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड हो तो चलेगा। क्योंकि लाइक नियर। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बहुत कम हो पड़ता है ना, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी कम लगा। हाँ, वो है। All right. So those who are looking for recorded lectures, I have already shared that all these technical topics, right? That will be covered in that. So जिन लोगों को भी अभी preparation start करनी है, ठीक है ना? तो they can certainly start with this particular one with the recorded ones, right? But who are looking for company specific live preparations, okay? So this is what we will be covering in the live lectures जो मैंने आपको भी बताया है, right? These are the questions that this is a typical discussion that we normally do, okay, on a daily basis. So if it is the live one, you do not you have time to prepare, right? From tomorrow we will be having our live sessions, right, at 8 p.m. Right, so it will be from 21st to 27th, right? And this is what we'll be covering in that. And those students who do not have much time, okay, they just want that quickly. I have already prepared, right, for my preparations. अपने अगर preparations कर लिए, but still you do not get that confidence कि अभी एक rough cut preparation हुई है, but the questions, technical questions are not yet prepared according to your satisfaction, then certainly you can simply quickly run through the lectures, right? Video lectures that are there. So it has all kind of questions for all kind of profiles, right? So these are the this one, right? So these are the lectures which covers Ind AS 115, 116, right? 16 audit lectures, okay? HR round, finance valuations related, right? So these are some of the things that you can certainly go for. All right. So anyone who's having any questions on that, definitely they can drop a message on our office number. All right. Now coming on to uh, uh, this, yeah, recorded lectures. Yes, you can certainly get it through our website, right? You can uh, visit our website on that. Okay, impact of bonus shares on share price. Yes, would there be any impact on bonus shares? Would there be any impact of bonus shares on share price? Yes, Sonu. Yes, sir. It will dilute the share price and uh, it will dilute the share price and it will also means the original shareholder will also get the less share prices compared to the previous one before issuing the bonus. Before it showing the bonus. Okay, okay.
मतलब कहने का बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट द प्राइस ऑफ लेट्स से शेयर इज ट्रेडिंग एट 2000, then they have given 1:1 bonus. So will the share price go down or not go down? Share price will remain 2000 or it will come down to 1000? Sir, come down to 1000. Yes, that's the right answer. Very good. Right. So yeah, good try, Sonu also. But yeah, Tarun, you've given a Sir, figure. market capitalization remains same, but share price come down. Share price will come down. Right. So 2000 rupees share will come down to 1000 after issue of bonus shares. All right. Okay, so these are the questions. Then there are questions related to term loan, right? This I already covered in the session. Okay. Uh, this is a question that you should compute, right? ये इसका snapshot ले लो आप, कि जैसे आपने इंडेक्स 115 के क्वेश्चन का स्नैपशॉट लिया था, इस क्वेश्चन का भी स्नैपशॉट ले लो. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? कंप्यूट पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस बिजनेस. ठीक है, सो इसका स्नैपशॉट ले लो. All right. Then some people have questions that what are the things that I should prepare for group discussions. So group discussions definitely कुछ companies जो करा रही है उसके लिए facts figures याद करना start कर देना चाहिए. Facts figures of GDP, population, right? And then use those facts figures in the discussion. ठीक है. But definitely like we will have a session on group discussion if once the shortlisting will come. So I'll talk more about that in that one. एक ये क्वेश्चन है, राइट? इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं बिकॉज दिस इज अ एप्टीट्यूड क्वेश्चन, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चन कि रिटर्न टेस्ट और साइकोमेट्रिक में क्या होता है. सो जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन. इफ अ पाइप A alone fills a bucket in 1 hour and pipe B alone fills a bucket in 2 hours, if both A and B combines, then in how many hours they will fill the bucket, right? So this is a question for from logical reasoning or mathematics point of view. These kind of questions are there in the uh, related to aptitude or psychometric or written test, whatever you may call, right? Who would like to give the answer for this one? You can write it in the chat box also. Okay, got one answer. All right. Okay. All right. Got two answers, four answers in fact. Okay, fine. ठीक है. सो चार आंसर्स आए. एक आंसर आया है 1.5 आवर्स, एक आया है 2 आवर्स, एक आया है 45 मिनट, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, और 1.5 आवर्स, 90 मिनट्स. ठीक है, अलग अलग आंसर्स हैं. तो देखो एक बात तो क्लियर है आप लोगों को कि 1 आवर से ज्यादा तो लगेगा नहीं. क्यों नहीं लगेगा 1 आवर से ज्यादा? क्योंकि अगर ए अलोन ही 1 घंटे में फिल कर देता है, सो बी भी अगर उसको सपोर्ट करेगा तो 1 आवर से तो काफी टाइम लगेगा, राइट? सो जितने भी आंसर मोर देन 1 आवर है वो तो गलत है. ठीक है. अब उसके अलावा जिन्होंने आंसर्स दिए, राइट, उसको अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है. तो इसका आंसर ऐसा रहेगा दैट वन इज फिलिंग इन 1 आवर, राइट? सो इन एन आवर, आवर के हिसाब से अब आपको निकालना है. ठीक है. तो ये आप लोगों ने जो आंसर्स निकाले थोड़े रफ कट आंसर निकाले, मतलब आपने एक assumption के बेसिस पे निकाले. ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया अभी तक किसी ने. सर एग्जाम में ऑप्शन देगा, मतलब टेस्ट में हम्म. एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा कि ऐसे ही पूछ लेगा, ब्लैंक दे देगा? हमको तो पता नहीं है, लेकिन एमसीक्यू ही होते हैं जनरली. तो
एमसीक्यू ही होते हैं मोस्टली। एक बार विप्रो ने जरूर किया था कि उन्होंने एमसीक्यू नहीं दिए थे, बट वो एक ही बार हुआ था। नॉर्मली तो एमसीक्यू ही आएंगे। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज 2/3 आवर, 2/3 आवर्स। कितना होता है 2/3 आवर्स? 40 मिनट्स। ठीक है, तो 40 किसने दिया था? तरुण ने दिया था, वेरी नाइस। और आशीष ने दिया था। ओके, गुड जॉब तरुण एंड आशीष। सर कैसे करा आपने ये कैलकुलेट? ये कैसे कर रहा है? इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि इन 1 आवर हाउ मच परसेंटेज ऑफ बकेट इज गेटिंग फिल्ड। सो अगर बी ऑन होता है तो वो 1/2 फिल कर देता है, और वन अगर ए ऑन होता है तो वो पूरा 1 घंटे में पूरा फिल कर देता है। सो इट विल बी 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। सो 1 घंटे में 3/2 फिल होती है, तो वन कितने में फिल होगी? सो 2/3, राइट। सो दैट इज गिव 40 मिनट्स। ठीक है, तो इसको अलग से मैं लूंगा क्वेश्चन, कभी आप लोगों को अगर इंटरेस्ट आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, राइट। All right, but yeah, apart from your interviews and all, yes, these are the questions you should also practice, right? कल को आप FP&A प्रोफाइल में जाओगे तो दे लुक फॉर दीज काइंड ऑफ स्किल्स फ्रॉम यू, कि लाइक आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए सर केस में। ठीक है, बाकी मैंने शेयर किए हैं आपके साथ 3-4 शीट्स शेयर की हुई है फॉर प्रैक्टिस, राइट। डू दैट वेन एवर यू फाइंड टाइम। और सर वो हाँ, जो प्रैक्टिस वाली शीट है उसमें एक हाँ, शीट तो एक तो मतलब ओपन हो रहा है, बट जब उसके बाद नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्स है वो ओपन कर रही हूँ तो उसमें आ रहा है परमिशन मांग। परमिशन लगेगी ना, तो आप हम्म, ऑफिस के नंबर मैसेज करते हैं ना, वो ग्रांट कर देंगे ओके। परमिशन। और आप एक बार ओके। अपीयर हो जाओ, हम्म। स्कोर के लिए भी मैसेज कर देना, वो आपको स्कोर भी शेयर कर देंगे। ओके। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, जीके के क्वेश्चन जो है, राइट। प्रैक्टिस शीट्स डेफिनेटली लाइक हम लोग रेगुलर क्लास में शेयर करते हैं, राइट, ऑल दिस प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना, दे विल प्रोवाइड यू। ओके, जीके क्वेश्चंस जो है दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट है जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जीडी के लिए अगेन हम लोग अलग से एक सेशन कर लेंगे। ओके, बजट आएगा तो बजट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना है, राइट। हम लोग वैसे अभी एक सेशन 24 को करेंगे इनकम टैक्स का, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट को इस बार कुछ बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है, तो वी विल हैव अनदर सेशन ऑल्सो। सो एक अभी प्राइमरी सेशन हो जाएगा, उसके बाद एक सेशन और करेंगे अगर रिक्वायर्ड रहा। All right. So yeah, right. So great. These are some of the questions. Although topics मैं आपको पहले ही बता चुका था, and these are some of the questions, right? So finally, who has given the right answers? So we have got these people who have given right answers: Surbhi, Rishabh, Yash, Sakshi, Pragya, Shriram, Surbhi, Manish, Parth, Tarun, Sonu, Tarun, and Ashish, right? सो जितने भी नाम है, राइट, आप सब लोग अपने अपने यूपीआई नंबर या फिर व्हाट्स अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देना ऑन दी ऑफिस नंबर, राइट, और दे विल सेंड यू द प्राइजेस फॉर द सेम। ठीक है, तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, गुड दैट थोड़ा क्लास का मुझे दिख रहा है कि लाइक दोस हु वर वेरी एक्टिव इन द क्लास, राइट, दे हैव गिवन गुड आंसर्स। ठीक है, तो वो एक फर्क पड़ता है, आप लोग अगर बहुत एक्टिव रहोगे तो फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एवरीवन शुड हैव गिवन द आंसर्स, राइट। आई आई कैन सी सम फेमिलियर फेसेस इन दी, जो क्लास में एक्टिव रहते हैं लेकिन अभी ऑनलाइन एक्टिव नहीं हो आप लोग, राइट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लाइक इंटरव्यू सारे ही ऑफलाइन होंगे, कैंपस में ऑफलाइन होगा, लेकिन ऑफ मतलब ऑफ कैंपस हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए। और जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो उन लोगों के लिए तो और जरूरी है, क्योंकि वो तो बढ़िया आराम से सब बंद करके बैठते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब कैमरा वैमरा सब बंद रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पार्टिसिपेट। देखो आते हुए क्वेश्चन कितने गलत हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिना मॉक इंटरव्यू दिए कोई भी बड़ा इंटरव्यू मत फेस करिएगा। ठीक है,
So this is what I would suggest. Mock interviews भी आप लोगों के आगे schedule होंगे, ठीक है? So definitely do appear in mock interview. You will really understand, क्योंकि theoretical world अलग है. You might have scored 100 out of 100 in financial reporting, but that was a different game. वो गेम ही अलग था. वो लिखने वाला गेम था. ये गेम है बोलने वाला. तो इसमें और उसकी स्किल सेट बहुत अलग है. So definitely you need a lot of preparation. Be ready for surprising questions. Okay. Practice these questions. यही questions घूम फिर के आपके सामने आएंगे. ठीक है. तो this is what I think one should prepare, right? Okay, so this was the end of the quiz. Now the session is open for Q&A. Okay, if anyone having any questions, they can सर एक certainly. क्वेश्चन है 116 से रिलेटेड